कर मॉर्टेलिटी रेट का प्रॉब्लम है, मैटरनल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन का प्रॉब्लम्स है, नंबर ऑफ ईयर्स दे आर स्पेंडिंग इन स्कूल इज इनएडुकेट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 32%। अभी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इसलिए है कि मोस्ट ऑफ आवर पीपल आर फार्मर्स, और मदर्स एंड सिस्टर्स आर आइदर ओवर वीवर, आइदर पोर्टर्स, or they are doing something somehow. They are doing the bamboo crafts, they are doing the cane crafts, and other period months of the year they are in the farms doing the farming. So they are not doing this. They are searching for a small government job, which is also not remunerated. स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। और आज आपको मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों लग रहा हूँ, बिकॉज आज मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सन है, एंड स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट उनके पास में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस एंड इन द ग्राउंड लेवल चीज़ों को उन्होंने समझ रखा है। तो सर ने PhD कर रखी है इन द रूरल डेवलपमेंट, एंड इन द ग्राउंड लेवल उन्होंने रूरल एरियाज में एंड लाइक मल्टीपल चीज़ों में उन्होंने काम कर रखा है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे एज अ पर्सन हु इज सिटिंग इन लाइक नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है, आप सब लोग नॉर्थ ईस्ट से हो, असम से हो, तो आपके पास कौन से एडवांटेजेस हैं, आपके पास कौन से फायदे हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। आज की डेट में सर ने कई बिजनेसेस को स्टैब्लिश किया है जो असम में या नॉर्थ ईस्ट में चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड लाइक आउट ऑफ द इंडिया अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो लाइक असम से उठकर आए हैं एंड बहुत तेजी से ग्रो कर पा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कौन सी इंडस्ट्री में काम किया जाए। एज अ यूथ जो इस वीडियो को देख रहा है, आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ लाइक गवर्नमेंट से हमें क्या क्या हेल्प मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो आज हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सो डॉक्टर सुकमल सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। मैं आप इतना चल के आया, तेजपुर से गुवाहाटी आया और मेरा घर में आप आया, आपका स्वागत है और मैं दिल से आभारी हूँ आप लोग हमारे पास आए बोल के। बेसिकली मेरा परिचय के बारे में अगर पूछेंगे तो मैं अपना परिचय वही बोलूँगा कि मैं एक रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशनल हूँ। गांव का उन्नति कैसे हो सकते, इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट कैसे हो सकते, वही मेरा दिल का सबसे जो प्रिय बात है, सबसे अपना जिसमें मैं अपना जिंदगी को ढूंढना चाहता हूँ, वही है कि रूरल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट। उसका मतलब हम किसी को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। अभी मैं विश्वास करता हूँ कि रूरल डेवलपमेंट ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें द बेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री शुड गो, दे शुड वर्क फॉर दैट। बिल्कुल, वी आर द इनहेरिटर ऑफ द रूरल सिविलाइजेशन। ये जो इंडिया का बात आप बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट का स्पेशली बात बोलेंगे, तो हम रूरल डेवलपमेंट से हमारा यात्रा शुरू हुआ। रूरल सिविलाइजेशन था, उससे धीरे धीरे कोई एक हिस्सा सिटी अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारा रूट को भूल जाए, क्योंकि हमारा सारी रूट पीछे जो है गांव में है। सही बात। आज देखिए इंडिया में करीब हमारा पास 6,49,481 गांव है, करीब 6.5 लाख गांव है। और नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा पास 40,750 विलेजेस है। केवल आसाम में हमारा पास है 26,393 विलेजेस। अगर हम वर्ल्ड का डाटा ले तो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है, एवरेज पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया इज जस्ट 44.7%. But if you come to India, the percentage of the people living in the rural areas is 66.7%. Okay. और जब आप नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हो, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होते हैं, करीब 82% of the total populations are in the villages. 82%. 82%. That is the beauty. This is your strength. And you need to start working on that. Okay. So अगर देखेंगे हमारा पास 3,98 more than that population है नॉर्थ ईस्ट में, और इसमें रूरल पॉपुलेशन करीब
3,27,00,000 उससे ज्यादा है। सही बात। और अर्बन पॉपुलेशन जो है इट इज लेस देन 1 करोड़ पॉपुलेशन, इट इज जस्ट 18%। तो हम जब एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में बात करता हूँ तो हमको रूरल एरिया का बारे में सोचना पड़ेगा साथ साथ में, क्योंकि रूरल पॉवर्टी इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द अर्बन पॉवर्टी। सही बात। आप समझे ना, जो आदमी को गांव में कोई काम नहीं मिल रहा है वो अनवांटेड होके रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में माइग्रेट करते हैं, और उस माइग्रेशन से ना उनको डिग्निफाइड लाइफ मिलते हैं, जो हमारा सिविक एबिलिटीज है उसका ऊपर में प्रेशर पड़ते हैं। तो ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, हम इसको भी स्टॉप करना चाहिए, हम उसको रिवर्स माइग्रेशन में कन्वर्ट करना चाहिए, ताकि हमारा जो यूथ, जो क्वालिफाइड जो है, जो टेक्नोक्रेट्स है, जिसका बैकग्राउंड है, जो कुछ कर सकते हैं और कुछ करने के लिए रिसोर्सेज का दरकार है। सही बात। नेचुरल रिसोर्सेज for which North East is proud for। तो नेचुरल रिसोर्सेज अगर चाहिए तो मैं यूथ को वही बोलूंगा कि आपको अभी रिवर्स माइग्रेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। आपने फॉर द हायर एजुकेशन यू हैव माइग्रेटेड टू सिटीज, अर्बन एरियाज, टेकन द एजुकेशन, बट आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ यू हैव योर रूट्स इन द rural areas. Go back to the rural area, identify the strength of this particular area, try to take a career, choose a career to become an entrepreneur, open a social enterprise, take up a startup. There are huge opportunities in the entire Northeast. All the 8 states, beautiful states of Northeast has kept their door fully open for you and they are calling you that come back. और मैं एक विश्वास करता हूँ कि अगर आप कोई देश का, कोई प्रांत का फ्यूचर में बिलीव करते हैं, तो आपको यूथ का फ्यूचर में विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। That if you are thinking for the future of the nation, you will have to invest to the future of the youths. So the recommendation to all is that let us try to make more and more investment, which is not adequate at this moment, in the rural areas, and let us give an amenities, let us give a kind of ambience, the climatic condition, the supportive conditions, so that the rural, the urbanites, the youth, those who have done their education in the urban areas, they are also appealed to the rural areas. Go back to the rural areas, start doing the work with them. अगर गांव में जाएगा तो गांव का जो आदमी है, they are very intelligent in Northeast, especially the women folk. हमारा सारी जो माँ और बहन है, सबका पास हुनर है। सही बात। और उस हुनर को अगर हम काम में लगा सकते हैं तो ना केवल गांव का भला होगा, पूरा देश का भला होगा, और सबसे बड़ा बात है आपका भी भला होगा। सही बात। तो हम इस तरह से सोचता हूँ, और हम आप सबको वही अपील करूंगा कि चलो let us go back to the villages, give our full concentration to the villages. So in नॉर्थ ईस्ट का बारे में अगर एक सेकंड बोलना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का बारे में कुछ स्पेशल पिक्यूलियरिटीज भी है। उसका जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है, 99% ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज perhaps you know with other countries. केवल 1% of its connectivity is with the mainland of the country. So in that way we have a huge exposure to the global market, to the international market, and you have so much of opportunities to penetrate into all these nations, all these countries, and you can bring a prosperous Northeast. और उसका जो ब्यूटी है वो आपको हम बता के खत्म नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। आपने जो ये चीज बताई ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस, कि अगर आप ध्यान से देखो कि नॉर्थ ईस्ट की जितनी बाउंड्रीज है सब अदर कंट्रीज के साथ में लिंक्ड है। ओनली 1 पार्ट इज लिंक्ड विद आवर नेशन। सो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अगर आप मल्टीपल कंट्रीज में अपने बिजनेसेस को फैलाना चाहते हैं, अगर आप बाहर जाकर अपने बिजनेस को लाइक अच्छा एक्सपोजर देना चाहते हैं, तो इन नॉर्थ ईस्ट वी हैव एन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। तो सर, जैसे आपने इतने सारे बिजनेसेस के साथ में काम किया है इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन द रूरल एरियाज, सो आप उसमें से कुछ बिजनेसेस के बारे में बताना चाहेंगे? कोई ऐसा प्रोडक्ट जो देखकर आपका दिल खुश हो गया कि ये चीज तो बहुत सुंदर है? जैसे आजकल जैसे गांव में या फिर विलेजेस में बहुत सारी कला है, लोगों के हाथों में कला है, वो हाथों से मैं देखता हूँ क्या क्या चीजें बनाते हैं, लकड़ियों से डिजाइन बनाते हैं,
तो कुछ आप बताना चाहें ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में? मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताऊंगा। अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकते हैं, किस एरिया में हम काम करना चाहिए, वो भी बताएंगे। उसका पहले मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में और थोड़ा दो चार शब्द बोलना चाहिए ताकि वी अंडरस्टैंड द रूरल नॉर्थ ईस्ट, पावर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पावर ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एज वेल एज वी नीड टू हैव ए प्रॉपर अप्राइजल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। सही बात। अभी देखिए, ये थोड़ा दुखद बात भी है। हम जिसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बोलते हैं, राइट, उसका जो रिपोर्ट आया 2021 का, ओके, we say it is MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें दिखा जा रहा है कि 1/3 of the population of Assam are deprived from the adequate health, education and standard of living. This report came in 2021, December 2021. तो जो 32.67% of the population of the Assam are still in a kind of, they are living in a condition which we can say that they are afflicted with the MPIs, multidimensional poverty. Now, what are these problems? The problem is because when you are to diagnose the solution, you need to understand the problem. I am trying to tell you the problem. You reach out to the grassroots, the most rural areas, which is the dream. I have already covered more than 3,000 villages in Assam and other states of Northeast. I went on my foot, sometimes on two-wheeler, sometimes with car, somehow, but I reached out to them. And I could make a very kind of intimate kind of observations. I found that there the problems are, nutrition problem is there, child, adolescent mortality rate का प्रॉब्लम है, maternal health problems है, education का problems है, number of years they are spending in school is inadequate. I'm talking about this 32% people. They have the problem of school attendance, they have the problem of cooking fuel, they have the problem of proper sanitation, supply of drinking water, electricity, housing, ownership of the assets. They don't have the real assets. And they even, sometimes I have seen that they don't have the bank account. Okay. So we will have to understand this. I'm trying to focus on the situation of the Assam. Again, if you come to Assam, and now if you try to understand the disparity of the various districts of Assam, in terms of MPI, this is a very beautiful, this is a very important information, piece of information I want to convey you. हमने बोला कि average 32.67% are somehow dwelling in the situation of MPI, multi-dimensional poverty. Out of that, certain districts are there which are much below, means their MPI rate is much higher. For example, there is a district called Hailakandi. 51.07% of the people are suffering from the MPI. Then comes the district Duvri. It is 51.06%. Come the name of the district Karimganj. You need to know all these things. Around 46% people are suffered with the MPI. Kachar district 42%. Gwalpara 40%, 40% plus. Borpeta 39.41%. In Borpeta? They are all attracted by the MPI. Come to the better picture of this. If you come to the Kamrup metro, only 11%, slightly more than 11% are in the MPI category. Nolbari, it is 16.94%. Jorhat 20.24% and Gulagat 20.60%. These are the higher side, the better side, giving a better look. So we will have to understand that when we are speaking of the inclusive rural development, सबको लेके आगे बढ़ने का बारे में जो हम सोच रहा है, तो हमको ये जो डिस्पैरिटीज है, इसका ऊपर में भी हमको बहुत गंभीर से सोचना पड़ेगा और किस तरह से उसको मिनिमाइज किया जाए, और जहां में कम है उसको और कम करना है, जहां में ज्यादा है उसको भी कम करके लेके आना है, so that we come to a level that yes, the entire Assam, or to say in a larger scale, the entire Northeast is progressing in a proportionate way. वो होना चाहिए, जो शायद नहीं हो रहा है। इसके लिए हमारा जो पॉलिसी डिस्पैरिटी है, अदर सिचुएशंस है, उसको हमको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने मुझे अपॉर्चुनिटीज का बारे में बोला। लेट मी, आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट whole of my life working in the Ministry of MSME related issue, micro, small and medium enterprises. हमने यूथ्स को मेंटरशिप किया है,
हैंड होल्डिंग किया है, गाइड किया है, मोटिवेट किया है, सो दैट दे सेट अप देयर ओन एंटरप्राइजेस. Instead of becoming a servant, they have to become a boss. They have to become a leader. Right. And the people should give him a respect that he is not a seeker, rather he is a giver. Yeah, 100%. ये जो है वो चीज मैं यूथ को बोलना चाहता हूँ, भाई you are the future. We have to invest on the future of you. Right. To secure the future of the nation. और उसमें आपका बहुत बड़ा एक रोल होना चाहिए. और इस रोल में आपको 3 क्वालिटी पहले इम्बाइब करना पड़ेगा, जो मैं नॉर्थ ईस्ट का हर यूथ मेरा अपना है. मैं दिल से आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपना को ढूंढो, अपना को खोजिए, आपका अंदर तक जाइए, आपका दिल तक आप पूछिए और पूछिए कि आपका पास एक एंटरप्रेन्योर होने का लिए, व्हाट यू से बिजनेसमैन, आई विल रादर प्रेफर द वर्ड एंटरप्रेन्योर. हाँ, एंटरप्रेन्योर होना चाहिए. उसका लिए आपके पास क्या क्या क्वालिटी है, राइट? बिकॉज एवरीवन कैन नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर. इट नीड्स सर्टेन क्वालिटी व्हिच आर कॉल्ड द स्पेशल क्वालिटी. बिल्कुल. और इसके लिए 3 बेसिक क्वालिटी का बारे में आपको कहना चाहूंगा. बिल्कुल. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा सारे यूथ को, हाँ, ये चैनल का मोटिव ही है ये तीनों क्वालिटी अपना का अंदर में आज से इम्बाइब करना शुरू करिए. बिल्कुल. ये 3 क्वालिटी को हम बोलते हैं कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति. राइट. इच्छा शक्ति का मतलब है आपका एक इनर ड्राइव होना पड़ेगा. बिल्कुल. आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होना पड़ेगा. आपको याद रखना पड़ेगा टू बिकम ए एंटरप्रेन्योर यू आर ऑलवेज टू गो फॉर ए अपहिल जर्नी. और उसका लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ताकि आप अपना मुकाम तक पहुंच पाए. और अगर आप जब मुकाम तक पहुंच पाओगे तो आप वहां से देखोगे हजारों आदमी आपको देख रहा है, आप कहां पहुंच गया. तो आई विल मेक यू ए रिक्वेस्ट दैट आपका अंदर में मोटिवेशन आना चाहिए, जिसका हम हिंदी चैनल में बोल रहा हूं तो हम बताओगे आपका पास इच्छा शक्ति होना चाहिए. राइट. सेकंड, आपका पास कर्म शक्ति होना चाहिए. आपको याद रखना पड़ेगा कि हम जिंदगी में दुनिया में इसलिए आया काम करने के लिए. We have to work hard. We are not supposed to depend on somebody that they will be working for you. It's a mutual understanding. Somebody will be working for you. You are also to reciprocate by doing work for them. So it's a kind of combination. And मैं बताना चाहता हूँ मेरा यूथ नॉर्थ ईस्ट का हर घर में मेरा ये बात चला जाए कि आप डिग्निटी ऑफ लेबर जो है उसका बड़ा करके लिख के रखो घर का सामने में, और become a man who always give much importance to do the hard working. आपका रास्ता अपना से स्मूथ हो जाएगा. And third is ज्ञान शक्ति. That means you need proper training, knowledge, orientation, understanding to become an entrepreneur. Right. You are a mechanical engineer, you are an electrical engineer, very good. You have done masters in food processing industry. These are all beautiful things. But these alone will not able to make you an entrepreneur. For entrepreneur, you need to have a different set of education, which also you need to imbibe. You need to have a set of training, soft skill, hard skill, thematic skill. ये सारी चीज को आपको imbibe करना पड़ेगा. So my message goes to the youth before I tell what you can do. Is that you need to have इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति. ये तीनों का ऊपर में ध्यान दीजिए. बिल्कुल. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अभी आप पूछेंगे ना, मैं कंटिन्यू करूँ? नहीं, मैं बताता हूँ आपको. तो ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई है, और हमारे चैनल का भी मकसद ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेसमैन को क्रिएट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस की तरफ आकर्षित हो. एंड लाइक बिजनेस में आने के लिए जो आपने 3 चीजें बताई ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति की लाइफ में. इवन मेरी लाइफ में भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब, मैं भी अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ. आई एम ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ एज वेल. एंड लाइक एक कोट है जैकमा का जो मुझे बहुत पसंद है, जो मैं सबको कहना चाहूंगा. दैट इज, आज शायद मुश्किल हो सकता है, कल और भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन परसों जो होगा ना वो शानदार होगा. Yes. So we have to like dream big and be a visionary. Yes. अगर आप विजनरी हो और आपके अंदर वो भूख है ना कि आपको कुछ पाना है जिंदगी में, तो आप एक बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में आते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर हो. लेकिन अगर हमारे अंदर में वो भूख नहीं है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. तो सर, अब हम जानेंगे, जैसे आपने बताया अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और मैं वापस से एक बार कम बैक करके वो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताना चाहेंगे, जैसे कि आपने इतने सारे बिजनेसमैन को देखा है या इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है जो अपना काम कर रहे हैं, एंड मैंने देखा है कि विलेजेस में
उनके पास में अलग ही क्वालिटीज होती हैं, वो अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाकर मार्केट में बहुत अच्छे से उसको सेल कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताना चाहें? प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताएंगे। आपने जैसे कोटेशन किया, उस कोटेशन को मैं दोबारा दोहराता हूँ। हाँ। और उसको मैं बोलता हूँ कि आपको हर यूथ को ये याद रखना चाहिए कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। राइट। तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर में निकाल के आना पड़ेगा इफ यू आर टू डू समथिंग। और एक चीज रखना चाहिए कि ड्रीम करना जरूर है, ड्रीम हमको, वी शुड हैव द ड्रीम, बट the price of dream is very, very high. We have to pay the price. Yes. So if you are dreaming, get ready to pay the price of the dream. Yeah. There is a very beautiful book. I will make a request to read it. This book was written by David Bronstein. He wrote that price of dream and how to change the world. So dream is always good, but it becomes only a hallucination unless you are ready to pay the price for that. Right. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मैं असम का जो यूथ से जो भी हो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, उनका सबसे पहले हम बताना चाहूँगा कि असम या नॉर्थ ईस्ट का जो बैकबोन है वो है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। राइट। समझिए, अभी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इसलिए है कि मोस्ट ऑफ आवर पीपल आर फार्मर्स, और मदर्स एंड सिस्टर्स आर आइदर वीवर, आइदर पोर्टर्स, or they are doing something somehow. They are doing the bamboo crafts, they are doing the cane crafts, and other period months of the year they are in the farms doing the farming. That means our civilization or our base of economy is depending on two things. One is the farming, the cultivation, and second is the traditional industries. So youths who want to build a career in the entrepreneurship, he or she will have to understand this traditional sector. ये ट्रेडिशनल सेक्टर को हम मॉडर्न सेक्टर में ले जाने का कोशिश होना पड़ेगा। ट्रेडिशनल सेक्टर में हमारा जो प्रोडक्शन है या जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, उसको हम इनोवेशन करना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को उसमें लेके आना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? राइट, 100% आई गॉट इट। Now let me take a very simple example. हम पेड़ी का कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, और पेड़ी का कल्टीवेशन करके उससे धान को निकाल लेते हैं, और धान को हम बाहर में भेज देते हैं, उसको वहाँ ही प्रोसेसिंग होगा, कहाँ क्या होगा, और हमारा जो फार्मर है they get very less return out of this because they are selling almost as a primary raw materials. मेरा कहना है when you look at it, paddy plant, paddy grass, you look from the bottom to the top, end product बना के sell, और चीज में, and you start doing value addition for every inches of this plant or the grass, whatever you say. We will not sell as a paddy, we'll make rice out of this. Yes. We'll make beaten paddy. We'll be making other things out of that. Right. We'll be doing the processing in the city, in the town, in the locality where it is produced. इसमें क्या होगा, लोकल जो यूथ्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो काम ढूंढ रहा है, उसको काम मिलेगा, सो एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। वहां में आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी लेसर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस विल बी लेसर। ये person who wants to become an entrepreneur has a very strong background can move back to the villages, set up this type of industries. Right. So my point is that your strength is the traditional industry and the farm sector. उसको आप modernize करिए, आपका हर चीज आगे बढ़ेगा। 1 week back I was invited by a group of people in Nagaland. Okay. Kohima. I went to Kohima. Okay. 18%. All are villagers. Okay. They are farmer basically from 4 villages. Okay. They came covering distance more than 60 kilometers, 60 to 70 kilometers. Okay. They came to Kohima, state capital, to meet me. And I had a talk with them for around 3 hours. उन्होंने बोला कि जिंजर जो है, अदरक जिसको बोलते हैं, उनका हर घर में अदरक होता है, और वो जो अदरक है वो ऑर्गेनिक अदरक है। अच्छा।
लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था नहीं है, प्रोसेसिंग या सेमी प्रोसेसिंग का व्यवस्था नहीं है, इसके लिए उसको बिक्री नहीं होता है. ही सेड दैट 8 to 10 rupees में पर केजी ऑफ जिंजर इज सोल्ड एंड समटाइम्स इट रिमेन्स अनसोल्ड. इट इज सोल्ड इन थ्रोन अवे प्राइसेस. गुवाहाटी मार्केट में जाइए, इट इज 140 rupees पर केजी, 120, 10-12 times more. But understand? like Meghalaya is not very far. Like we can bring the product there. Now what we have to do? Here is the need of the intervention, and this is the intervention of the entrepreneur. So entrepreneur has to intervene in between the market and the farmers. You understand? Where is your place? There is a complete vacuum. Yeah. There is no marketing linkages. There is no production center. There is no value addition processes. There is no availability of the technology, the rural appropriate technology. These things are missing. So because of this, the total link is missing. Now the moment you set up one ginger processing, modern ginger processing, mini ginger processing industry, you start dehydration of the ginger. साथ साथ में क्या होगा, उसका वेट घट जाएगा, उसका वॉल्यूम घट जाएगा, उसका लाइफ लेंथ बढ़ जाएगा, और इनका जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री चाहे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज हो, इसमें इनका इतना सारी डिमांड है और बाहर का कंट्री में उसका डिमांड है. आप जिंजर को जब लोकली सेमी प्रोसेसिंग कर देते, 2 साल तक आप उसको प्रिजर्व कर सकते, करके 2 साल का अंदर में भी आप मार्केटिंग कर सकते. सच ए ब्यूटीफुल थिंग. अभी उसमें क्या होता है, देयर इज अ रिपल इफेक्ट. द मोमेंट जो फार्मर है वो कल तक 10 रुपया या 8 रुपया में मुश्किल से जिंजर बिक्री कर रहा था, आज उसके लिए कोई मुश्किल का बात नहीं रहा. वो आपका प्रोसेसिंग यूनिट में लेके आएगा, और आपको जहां 200 रुपीज केजी मिल रहा है, तो आप उसको 50 रुपीज देने में आपको कोई तकलीफ नहीं है. 60 रुपीज आप उसको 50-60 रुपीज 70 रुपीज आप देना शुरू करेगा. द मोमेंट यू स्टार्ट देम पेइंग रिम्यूनरेटिव मनी against their hard work, इनको क्या होगा, they will become very encouraged. साथ साथ में वो अगर 5 एकड़ लैंड में कर रहा था, वो 10 एकड़ लैंड में करना शुरू करेगा, क्योंकि they have got the market, they have got the technology. So to all my entrepreneurs, this is my humble request. I was talking about the hot chili, the naga mircha we say, bhut jalokia, king chili, so many names. Will be strange if you know. If you just do little bit of drying and packaging, no further processing is required. You can sell this product at such a price, it's unbelievable price. You will be catching a market of 50,000-60,000 times higher prices. But our boys, our youths are not doing this. They are searching for a small government job, which is also not remunerative. यहाँ में public sector कुछ है नहीं, corporate sector है नहीं, so it is our future. So let me take you another small example. Northeast, mostly hilly area. By default, God has blessed us to remain organic. Mostly we are organic in the hilly zone. वहाँ पे क्या होता है? Beekeeping is one of the beekeeping up. मधु पालन जो beekeeping, you understand? Like no. Honey processing. Honey. Honey जो bee. शहद का मधुमक्खी जो छत्ता होता है, मधुमक्खी जो पालन है, it is totally a scientific job. People has taken up this as one of their best fitted sector for become an entrepreneur. अभी मैं बताता हूँ, अगर आप हिली जोन में मतलब हायर ऑल्टीट्यूड में बी कीपिंग करते हो और ऑर्गेनिक बी होता है, तो उसका जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में इज वेरी हाई. यहाँ में हमारा जो गांव में बी कीपिंग कर रहा है, जो होनी निकाल के आ रहा है 200-250 रुपया में केजी बिक्री होता है. ठीक है. द मोमेंट यू डू द पैकेजिंग, यू गिव द टैग मार्क, यू ब्रिंग ऑल द लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द फूड आइटम्स, and you say that this is at this much of altitude, and this is organic, it fetches a price of 3,000 to 4,000 kg 1 kilo per kg. और बी कीपिंग के बारे में मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमारा जो SDG गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टारगेट इज 2030 एंड वी आर जस्ट इन द मिड ऑफ द गोल. हमको रिव्यू कर रहा हूँ, वी आर रिव्यूइंग द SDGs. एट दिस मोमेंट आई एम टेलिंग, इफ यू डू द बी कीपिंग, जो हमारा 17 गोल है ना,
वो 17 गोल का 5 गोल हम अचीव कर सकते हैं थ्रू बी कीपिंग। फॉर एग्जाम्पल जहां पे आप बी कीपिंग करोगे, बिकॉज ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन, उसका जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो 2 times, समटाइम्स मोर देन 2 times बढ़ जाते हैं। अच्छा। सो वी कैन रिमूव द हंगर फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ बाय डूइंग द बी कीपिंग। क्योंकि जिस फील्ड में आपको 3 क्विंटल आपको राइस हो रहा था, वो 6 क्विंटल हो सकते। सही बात है। राइस, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द actually rice does not have much connectivity with the beekeeping. I'm talking about the, suppose take the other examples of all the horticultural product. Take the example of lychee, take the example of lemon, take the example of any kind of fruits. They are all cross pollinated. So these are the areas where we need to work. 100%. Pottery is a sector. मिट्टी का जो बर्तन बनते हैं, मिट्टी का जो काप बनते हैं, आज का दिन में हमने प्लास्टिक को अवॉइड करना चाह रहा हूँ। और ऐसे एक दिन था जो हम देखते कि रेल स्टेशन में हम कुल्हड़ में चाय पीते थे। So these days has come back. हाँ, अभी भी चलता है। It's a circular economy. We need to understand. बिल्कुल। आपने प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते, मॉडलिंग यू कैन नॉट सपोर्ट। So what are the organic materials, what are the biodegradable materials, इसको आप रॉ मटेरियल्स बनाना चाहिए, उससे आपको प्रोडक्ट लेके आना चाहिए जिसका नेशनल इंटरनेशनल मार्केट है, और उसका लिए आपको मार्केट ढूंढने का दरकार नहीं है। So the opportunity is huge. Right. People say that sky is the limit. I defer to this. I never say sky is the limit. I say mind is the limit. The moment you stop that you can not go further, you stop there. So we don't say the sky is the limit. We should say that mind is the limit, and we need not keep ourselves limited to any extent 100%. because your journey has no end. Okay. So as you told us about the Meghalaya and the Zinjar wala thing, I was talking about the Nagaland. This applies to Meghalaya also. Yeah, Nagaland. So, like, how far is Nagaland from Guwahati? आप अगर जनशताब्दी एक्सप्रेस में बढ़ जाते हो, हाँ जी, तो it takes exactly 4 hours. 4 hours. Okay. सुबह 6-10 बजे ट्रेन यहाँ से चलते हैं, 10-15 या 10-20 पे जाके पहुंच जाते हैं। So Meghalaya और गुवाहाटी is very nearby. Like just 4 घंटा लगता है। मेघालय गुवाहाटी जो है, आपने फिर मेघालय बोल रहे हैं, मेघालय मतलब शिलोंग परहैप्स, शिलोंग तो और भी पास में है, 2 घंटा का जर्नी है। I am talking Nagaland. I'm talking about the Dimapur. Sorry. Dimapur, you will be taken to Dimapur in 4 hours. Yeah. So these are all reachable areas. Guwahati just 4 hour का रास्ता है। एंड वहां पर आपने कहा कि जिंजर बहुत ज्यादा कम प्राइस में लोग सेल कर रहे हैं और इवन लाइक नहीं बिक रहा है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग? वो तो यहाँ पर आराम से बेच सकते हैं ना, जस्ट 4 hours का रास्ता है, आराम से यहाँ लाकर बेच सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ द प्राइस इज वेरी हाई। दिस इज नॉट द एग्जैक्टली द सॉल्यूशन। हमने जो सॉल्यूशन को मानते हैं या हम सोचते हैं कि वही हमारा सही सॉल्यूशन है, नहीं, हम चलना चाहता है कि एग्जैक्टली करेक्ट दैट कि हम एंड प्रोडक्ट बनाएं इसका, हम लोकली प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करना चाहिए। बिल्कुल 100% I agree with that. When you do the processing, because you are always at the risk when it is in a very green form, unless you do this, because lifespan उसका नहीं बढ़ रहा है। और मेरा कहना है कि we are not exploiter, we are entrepreneur. We have to help the society. Right. We have to take the society along with us in making the progress. ये तो ब्रिटिश का रोल हो जाएगा, गांव से काचा माल लेके वो अपना जगह में चला गया, वहां में जाके प्रोसेस करेगा। मैं कहना चाहता हूँ हमारा जो चीज है वही यूनिट बनाओ। हाँ, हम यहाँ पे यूनिट बनाएंगे। अभी मान लीजिए जो वर्ल्ड का जो टी प्रोडक्शन है उसका 15.6% मान लीजिए वर्ल्ड का, वो केवल हमारा असम में होते हैं वर्ल्ड का। सही बात। और इंडिया का जो है उसका 55% of the production share is from Assam. Okay. We can find our fortune here. And our boys are doing this. It is not that they are not doing this. It's so lovely to see that qualified boys, the girls, they are coming forward. They are coming to me. They met me so many times to my office chamber. I went to them and I am seeing that they have set up the small processing unit. They are making this. They are giving the organic tea, selling it outside, bringing the name, fame, and money for the state of Assam. This is strange things, most beautiful thing they are doing for us. So these are the things
We have started the journey. I have no negative sense in my mind. Yeah. Our youths are very, very positive. They have a sense, they have a love, they have an emotional attachment to the grassroots of the Assam and Northeast. And I believe that they will be doing wonders in coming days. And with what is need, that giving them motivation, give them recognition, make a family atmosphere where your parents, where your school teacher do not say that be a doctor, be an engineer. Rather, first they should say that you be a good human being first. And second, that you try to help others. And to help others in a better way, become entrepreneur. Because today the main crisis, the crux of the problem is unemployment. Right. And the problem of unemployment can be solved not by the government, not by any other, but by the entrepreneurs. 100%. So I believe that it is the entrepreneurs on whom we need to depend and we need to work. Okay. So, sir, I also wanted to know, जैसे आपने बताया इस पूरे प्रोसेस के बारे में, so इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि rather than just selling the चीज मतलब सस्ते में खरीद के बेचो, उसके अच्छा कि उसको यूनिट बैठाओ एंड उसको फिर आप मॉडिफाई करके पैकेजिंग विद द ट्रेडमार्क आप उसको सेल कर सकते हैं. Correct. लाइक इफ देयर इज अ स्टील और समथिंग, आप उसको पर केजी 100 रुपए कमा रहे हो, उसी स्टील का अगर हम उसको थोड़ा मैन्युफैक्चर करके पाइप बना देते हैं, हम उससे 200 कमा सकते हैं. उसी को अगर हम टुकड़ों में नीडल्स कहते हैं, सुई बना देते हैं, देन वही सेम 1 kg ऑफ द स्टील से हम लाइक बहुत ज्यादा पैसे बना सकते हैं. तो लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी हैव. सो इस जगह में जैसे हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम रूरल एरियाज की या विलेजेस की, एंड आपने यहाँ पर 2-3 चीजें भी बताई कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है. लाइक उनको बैंक अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. They even some people don't have their bank account as well. They don't know how to process UPI processing. They don't know anything about the UPI, the digital India, and all digital India. They don't know. But today is the situation that all of we will have to have some sort of knowledge on these things. At least we need to know the primary works, because now the physical transaction of money is not taking place. So you need to understand this. So इसका लिए भी हमारा एक यूथ होना चाहिए. They can also become an entrepreneur in that way. They will be working for the digitalization of the rural youths, rural people. They need to go reach out to them. How to take a mobile photograph, how to make a small video of their product, how to open a bank account, how to do so many transaction types of things. All these things to be taught. There is an area where somebody can become an entrepreneur. Here is an entrepreneur. You are talking about the steel. I will rather give you an example which is just an example. in an example which is in context of Northeast. Now let me tell you. आपको मालूम है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बैम्बू कहाँ होता है, कौन से कंट्री में होते हैं? डू यू नो? लाइक सबसे ज्यादा बैम्बू the highest bamboo resources in the world is China. Okay? China. Okay. And second is India. ठीक है? अभी इंडिया का सेकंड है, और इंडिया का जो बैम्बू रिसोर्सेज है उसका करीब 66%, slightly less than 70% resources है नॉर्थ ईस्ट. Our bamboo has become a craze today because it is grass. It is not going to do the deforestation. So our youths can find their future in bamboo sector. Let me give you one example. One day in India we burn agarbatti. The single sticks. 1,490 metric ton. 1,492 metric ton weight or bulk of agarbatti is burnt. We go to the temples or ships, everywhere it is used. But unfortunate part is that out of this 1,492 requirement per day metric ton, only around 750 metric ton are processed and produced in India. Remaining we are bringing from China and Vietnam. Okay. Now because of this situation, we are remaining unemployed, whereas we are full of resources, and there is no rocket science in making bamboo sticks for making agarbatti. We can set up small mini plants. Now government of India has taken policy decision
where the import duty has been enhanced from 10% to 25%, so that the bamboo sticks or the agarbatti produced in those countries cannot sell at a lesser price. Now this is an opportunity, and this opportunity is basically for the Northeast. So I will make a request to all the youths: find your fortune in bamboo sector. Start making bamboo agarbatti stick, for which there is a huge market, and you don't make any wastage of anything of the entire bamboo, because all the small pieces also can be used in different varieties. Right. You can make plywood. You can use it for making of ethanol. You can have several processes. Lot of things can be done. So this can become a very, very shining sector for the youths. And I believe that then comes the food processing sector, the horticulture sector. One of the brightest spot in the entire Northeast India is that our agro products, our horticultural product, our food products. Let us start working. If you search me on Google, you will be seeing almost I have written for the many things, many products, many raw materials which can be properly exploited. Taking the local people with us, the community involvement is very much important. Again, I will give much emphasis on involvement of the community. When you go to the rural people, as a youth, as a qualified youth, they should appreciate you as you are the real guest of them. You come to the helping. You should not go with a motive to exploit them. If this takes place, I think the entire Northeast region, the rural sector will march forward, and nobody can really stop us. Will become successful. 100%. I believe that if we can give one family, one entrepreneur from Northeast, one family, one youth from each family, if they dedicate themselves to become an entrepreneur, you will be seeing that we will not ask for a single penny from elsewhere. The resources, the money which we will be developing, that will be surplus to convert, to transform entire Northeast to a golden paradise. I believe this from the core of my heart. 100%, unbelievable. Like, amazing. By sitting and in this podcast, even I got lots of ideas in my mind that what else business ideas we can do and what are the opportunities that we have in the north. So बहुत सारे ideas हमें generate हुए हैं, बहुत सारी चीजें लोगों को भी सीखने को मिली है. लेकिन एक सवाल आता है मन में, जैसे कोई भी अगर entrepreneurship के बारे में सोचता है and जो आपने ideas बताए उस पे काम करना चालू करता है, there is a huge investment that they have to take place. Like there is a huge investment जिसके ऊपर उन्हें काम करना पड़ेगा, because अगर आपको कोई यूनिट सेट करना है या कुछ भी सेट करना है तो like इसमें पैसे लगने वाले हैं. तो like how you or MSME or government is going to support an entrepreneur who is sitting in front of us, like जो entrepreneurs अभी कुछ करना चाहते हैं? This is a very, very appropriate question. और इसमें हमारा youths का सबसे ज़्यादा शंका होता है. They suffer from this. बहुत बड़ी problem. That who will be providing us the capital? Other things somehow we can manage. But where from the money will come? And that I'm telling you truly, this is a threat to our youths. Here, first thing I will tell them is that I believe in a small quotation: small is beautiful. The career of entrepreneurship is something you need to start from a small size. So start from the small thing. Investment will come from the government. To a certain extent. The bulk of the investment has to come from the bank sector, from the bankers, and for which so many directives, so many standing orders are given. The Start of India concept has come. The Assam, we have our own. That now, from last month, I have been working on the Indian Institute of Management, Kolkata. Now, here is a real challenge, and I will not stop you in saying this is the truth. Point is that you know, we have around 3,000 bank branches alone in Assam. And 78% of these bank branches, please record this, are in rural or semi-urban areas. 78%. 78% of the bank branches are in rural areas or in the semi-rural, semi-urban areas type of things. But
when our youths approaches the bank, although there is a lot of instruction, there is a dedicated organization, SIDB, Small Industry Development Bank of India, and there are so many nationalized commercials and other banks. All are supposed to support the micro and small MSE sector, Right. micro and small enterprises sector. But it is not coming forth. Let us take an example. We are implementing the Prime Minister's Employment Generation Program, a flagship program of the Government of India under the Ministry of MSME. I personally know how much trouble I faced in providing employment, creating non-farm sector employment in entire Northeast region. Although we could maintain and create a record, my profession, my job with the Ministry of MSME, Khadi and Village Industries Commission, Government of India from January 2018 to 2022 December, this 5 years, I worked, my team worked dedicatedly, and we provided employment to 250,000 people. This is on record. Through various entrepreneurship, creating entrepreneurship, providing handholding From to Northeast. from the Northeast, providing handholding to the artisans. It's a big achievement. Right. 250,000. But we need not stop here. We will have to understand. Still, they have a lot of miseries, that lot of problem. So I make an appeal to the banking sector that you are duty bound. You are not to take only the deposit from the people. Yeah. You are to invest back to the society. Right. You cannot take the money of the Northeast region, deposit of the Northeast region, for spending in a state where it is much ahead industrially. You cannot take out our money. So whatever you do the investment, your CD ratio, you understand? CD ratio, credit deposit ratio it is called. How much you are giving to the society, how much you are taking from the society is very, very poor. It is maybe hovering around 33-34%. Whereas you go to an advanced state, go to Maharashtra, go to Gujarat, you'll be seeing that this is 70%, 72%, 65%. And it's this 30% money they are taking for the people and giving back to the entrepreneurs so that they can set up the industries. But here in Northeast, it is not happening. It is much lesser in some other states of the Northeast region. I was quoting the figure of Assam. And that also CD ratio will be seeing that they are giving money to a government job, person who is doing a government job, whose repayment is assured for buying a car. Right. Giving money for building a house in the city. ठीक है, आप ऐसा करिए, इसमें कोई आपको रुका नहीं रहा है, लेकिन उसमें मेरा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है. हमारा सोशल जो मैसेज है वो बैंकिंग सेक्टर से नहीं जा रहा है. तो बैंकिंग सेक्टर विल हैव टू रीओरिएंट देमसेल्व्स टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट. दे विल नॉट डू द सेल्फिश बैंकिंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन. और इसके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली बोलना चाहता हूँ. और उस साथ साथ में मेरा यूथ्स को भी मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि बैंक का जो पैसा है वो देश का पैसा है. हम सब ने उसको बैंक में डिपॉजिट किया है, तो उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज करिए. और आपको जो पीरियड दिया गया है उस पीरियड में आप स्लोली उसको रीपेमेंट करिए. अगर आप नहीं करोगे तो आपका पीछे का जो सीढ़ी है, द नेक्स्ट जनरेशन, द जनरेशन बिलो यू विल नॉट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द बैंक. दे विल से दैट वी हैव स्पेंट द मनी ऑन द यूथ ऑफ योर प्रीवियस जनरेशन बट दे हैव नॉट paid us back. So we need to have a model upgradation in terms of our thinking also. Got it. So it's a mutual, it's a symbiotic kind of thing. So you need to understand what the banking sector has to do for us and how we are to reciprocate to the banks. These are all has to bring a proper equilibrium. And here is the job of the leader, the social impact creators. If I believe that I am a man who is working for bringing the social impact, I need to teach our youths, and again I need to send the message to the bankers in the same way. Right. I will request my youth to browse to the various websites of the government. We'll see that Startup India, Niti Aayog ka project se, Ministry of Rural Development, above all Ministry of MSME, Ministry of Textile,
all has certain schemes for rural development, for entrepreneurship, and these schemes are formulated for you only. You need to take the benefits. So it is not necessary that I take the name of schemes one by one. You are so qualified, you are so intelligent. Just go you through please Google go and through, find out everything and see where you get the resources. You do that. There are so many dedicated training institutes who will be giving you proper orientation in soft skill, in hard skill, everything, so that you are really groomed as an entrepreneur. Right. I repeat, that if one family, one entrepreneur is created, everything will change, and there is no need. Will not be even submitting an application to the government for providing a job. Rather, we'll call that, give me the people, I will be providing job to them. So there has to be upside down. There has to be. We need to start from the bottom of the pyramid. Right. The passion, like I can see the passion in yours, and that is amazing. जो जोश के साथ में, जो पैशन के साथ में आप चीजों को कन्वे कर रहे हैं ना, that is amazing, unbelievable. This comes out of love. When you love the people, na. These are the things I'm speaking from the core of the heart. From the heart. And in an interview, in a dedicated interview, 1 hour interview it was, I was asked the last question that what is the mission of your life? Yes. I told them that India has 6,49,481 villages. Okay. The number of years left in my life, I will not able to visit all the villages, but it is the dream of my life is that if I can reach out most of the villages of the Northeast region, which is 40,750 villages. Okay. By this time, I have covered only 3,000 villages. So I need the moral support from everyone. You have covered 3,000? Yeah, I covered. And I want to reach out to each and every villages of the Northeast region, touch the soil of the Northeast region with due respect, honoring them, because it is the land where from we all germinated, we all born. Right, got it. And the audience that are watching this video, like हम सब आपके साथ हैं, आपके मिशन में, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, अगर हमारे साइड से हम कुछ भी कर सकते हैं. एंड अब इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी यूथ, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, जो wannabe एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब लोग बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो चुके हैं. एंड अब हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करने वाले हैं इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन. एंड कहीं भी हमें आपकी सपोर्ट या आपके मेंटोरशिप की जरूरत पड़े कि हम आपसे कुछ चीजें पूछना चाहें, जानना चाहें, तो हम आपसे कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं? I am alive 24/7. Right. And I want to dedicate and rededicate for the development of this region. Okay. I love the youths like anything. Yeah. I've already told that if a nature search her future, the future is with the youths. Yes. So you make all your investment for the Okay, so can I share your LinkedIn profile? You can share my LinkedIn profile. You can LinkedIn my email ID. Or it is of course there in the LinkedIn. If they feel like I can tell my mobile number also, I have no hesitation because I believe that if somebody is receiving a little bit of help from me, I am making the purpose of my life. I am finding the purpose of life. Why I am awakening every day? It is because to do something. So today I'm feeling very motivated and मैंने ऐसा विजनरी पर्सन मतलब नहीं देखा है जैसे आप विजनरी हैं नॉर्थ ईस्ट को लेके. So thank you so much, sir, for being in our podcast. So sure, I'm just sharing your LinkedIn profile and your email ID in the description section. Correct. Yeah, if somebody wants to connect with you, he will just share you the email and stuff. Yes. And if you like the idea, if you like to connect with them, you can share them your number as well. Yes, definitely. So yeah, thank you so much, sir, for being in our channel. Like अभी बहुत से सवाल हैं मन में, लेकिन समय के कारण हम इस को यहीं समाप्त करना चाहेंगे और हम ऑडियंस से चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हम सर के साथ में फिर से एक पॉडकास्ट करें एंड आपको और ज्यादा डीप नॉलेज दें इन द टर्म्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो इस वीडियो पे आप कम से कम 1000 लाइक्स करके दिखाएं एंड कमेंट सेक्शन में अपना प्यार हमें दिखाएं कि यू वांट द पार्ट 2. हम फिर से गुवाहाटी आएंगे, फिर से सर से मिलेंगे एंड पार्ट 2 रिकॉर्ड करेंगे. सो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा. Great pleasure, really. Indeed, I am feeling my life today is a gifted day in my life. Okay. Thank you so much.